Hey you guys, welcome back to my channel. I am Myshadowbeats and your Pallavi. So guys, today is a bright sunny day in London. मतलब आप धूप देखो यार, कितनी तेज़ धूप है. And obviously Sunday है तो वाह वाह वाह, मेरा तो दिन ही बन गया. And also आपको अगर ये लोकेशन याद होगी, ये देखो जिसमें मैंने इंस्टाग्राम में फ़ोटो डाली थी, दैट लोकेशन वर्सेस पिक्चर. सो आई एम एग्जैक्टली एट दैट लोकेशन. आई एम एट द थेडॉन बायो स्टेशन. ये रही ट्रेन आ रही है. सो आई एम एट द थेडॉन बायो स्टेशन और मैं यहाँ पे एपिंग ट्रेल के लिए आई हूँ. मैंने एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है. आई लेफ्ट माई शेड्स इन द ट्रेन. मतलब मैंने चश्मे ट्रेन पे ही छोड़ दिए हैं. एंड बाद में किसी बंदे ने डोर पे नॉक किया एंड कहा कि यू हैव लेफ्ट योर शेड्स. सो आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन. सो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट स्टेशन. अभी दैट ट्रेन इज़ कमिंग बैक. सो आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम बैक सो दैट आई कैन जस्ट गेट इनसाइड द ट्रेन एंड सर्च फॉर माई शेड्स. मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो दैट्स ओके. शेड्स खो गए तो क्या हुआ. इट्स संडे एंड इट्स अ ब्राइट सनी डे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रेल. But before we start the trail, if you guys have not subscribed to my channel, please do subscribe and like, comment, share भी कर देना. और ये देखो, so this is the view. And so if you guys follow me on Instagram, तो आप लोगों ने देखा होगा that there was a reel I posted outside a beautiful pub restaurant, you can say the British restaurant. वो है ये The Bull. Yes, so it was It is in the Epping area. So I am going to start my Epping trail. Though I'm very sad क्योंकि मेरा चश्मा खो गया, but that's okay. Let's have a fun day, a Sunday fun day, and start the trail. So this is Theydon Bois का high street. High street मतलब shops and all that. And look at the beautiful park. Look at this beautiful park. ये कितना green है, and the sun of course. So let's start our trail from here. The good thing is that today is a bright sunny day and oh my god, though it's cold, it's 6 degrees, but धूप से वो अलग सी feeling आती है, वैसी आ रही है आज. Wow, look at this pretty. Here you can see the Epping Forest board. This all comes under Epping area. Oh my God, यहाँ रहने में कितना मज़ा आएगा ना. घर, गाड़ी, पार्क. Yes. Yes मम्मी, बताओ क्या हो रहा है. मैं थोड़ा ट्रेल पे जा रही हूँ. अपने माथे पे ये गोप्रो लगा के. कुछ नहीं, it will be easy for me to shoot the videos. है. So that camera is for other shooting, GoPro is for action shooting. तो एक जंगल है, फॉरेस्ट, उसमें वॉक करेंगे हम लोग 7-8 किलोमीटर्स. समझी? वीडियो बनेगा. हाँ मम्मी. चलो बाय. That's how I shoot my trail videos. GoPro on the head. So guys, the trail has already started. I have entered the forest now. It's a 7 to 8 kilometers का walk.
समर्स में ये पत्ते पूरे ग्रीन होते होंगे। ये पूरा जंगल नहीं लग रहा है? गूगल मैप्स मुझे क्या रास्ता दिखा रहा है। दिस इज लाइक अ प्रॉपर जंगल। यहाँ मुझे कोई मतलब कोई रोड ही नहीं दिख रही है। देयर इज नो पाथवे टू गो। आई एम गोइंग टू कवर दिस ट्रेल। Oh my god, not sure if Google map is showing the correct direction because there's no pathway. It's all jungle. Guys, that's how I shoot my videos. GoPro, headgear and a selfie stick. फोटोज भी सेल्फी स्टिक से ही आती है बाय द वे, जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम में पूछते रहते हैं उनके लिए है ये। सो दिस वाज द पाथ बट दिस गेट इज क्लोज्ड, सो अगेन आई एम गोइंग बैक एंड टेकिंग अनदर रूट। सो आई एम जस्ट 5 minutes अवे फ्रॉम डियर सेंचुरी एंड वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं डियर दूसरी बार देखूंगी। एक बार तो मैंने when I was going to Ooty on the way देखा था कोयम्बटूर नेशनल पार्क के आसपास। So let's go and see deer. It's written there, deer sanctuary. But where are the deers? Guys, it's written here deer sanctuary, but I can't see any deer here. मतलब मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। So I already started my trail, but after half an hour I took a detour क्योंकि that trail was only 5 kilometers, and second reason was that I thought why not to take a longer path and see deer sanctuary also in between, but मुझे deer बिल्कुल नहीं दिखी वहाँ पे। So yes, no deer, but good that I am taking a longer path. I wanted to take a longer path and this is about 8-9 kilometers. Fun. Yay! Woohoo! Wow! Run! Oh, थक गई।
सो गाइस दिस इज़ दैट पार्किंग लॉट जहाँ से मैंने कट लिया था. सो बेसिकली यहाँ से मैंने कट लिया था. नाउ आई हैव कवर्ड दिस होल पाथ. आई एम हियर. अब यहाँ से आई विल कवर दिस ट्रेल. सो दिस इज़ द पार्किंग लॉट. Till now I have only covered 3.5 kilometers. More 5.5 to go. Zoo! Oh. In my Goring trail when I wore my white sports shoes, तो वो रास्ता was so muddy कि मेरे पूरे shoes खराब हो गए थे. So this time I wore these leather boots which are not at all helping me. They are actually hurting. So of course trails and all के लिए तो sports shoes या फिर mountain shoes are the best. So 3 more kilometers to go. ये वाले ट्रेल में थोड़ा बीच में रोड में वॉक करना होता है. And then I'll again go back to my trail, मतलब forest pathway. So this is a road. And look at these pretty houses. So this is a golf course. So guys, finally my trail is over. I am right where I started. It is here. यहीं से start करा था मैंने. And ये देखो. So it's like 11.37 kilometers in 2.36 hours, जिसमें कि मैंने थोड़ा मतलब half an hour से ज़्यादा like 40-45 minutes I wasted for taking pictures and Instagram reels. But yeah, it was a fun trail. And so this trail is for 9 kilometers, but I was lost somewhere in the middle of the forest. Then again I have to come back, so that was like 2 kilometers I did extra. So yeah, very excited, but now I'm very hungry and I'll go to some pub to eat something. And if you can see here, it is Luton and Epping. And now I'm super hungry. I just had my breakfast sandwich, egg sandwich. And now I'll go and have like some amazing chicken or fish. A good Sunday, except that losing my shades. Oh, by the way, I also lost one of my earrings. एक मेरे कहीं गिर गई forest में. And then I thought that today is a losing day. पहले चश्मा चला गया, फिर earrings. But ठीक है, मज़ा आया. So guys, I'm going here. This looks good. Queen Victoria. अंदर जाके देखते हैं. Sunday 12 to 10 p.m. Food 12 to 6 p.m. Okay, let's go inside now. This looks like a house, but it's a pub, which is very pretty. Treat mums this Mother Day. Oh my god, I'm so full guys, and the food was so yum. ये boots ने तो आज मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया है, but never mind. I had a very good day, actually very good walk, and the forest walk was very nice.
सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर ओनली, बट उससे पहले मैं आपको क्वीन विक्टोरिया के बाहर का लुक दिखाती हूँ. प्रिटी ना. And this is the outside area. I think people must be sitting here during summers. अभी ठंड में तो कहाँ ही बैठेंगे. That's it guys, I am going to end this video here only, and if you liked my video please give a thumbs up and do like, comment, share, and if you want to come for this trail please do come. This Epping trail is really nice, and please subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and I'll see you in my next. Bye. Have a happy week ahead. Bye.